Hello friends, welcome to One Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the most important news from the Hindu edition of 16th November 2022. So we are going to look at the important news. कुछ न्यूज़ के बैकग्राउंड भी हम डिस्कस करेंगे विच आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम. फॉर एग्जाम्पल G20 है, तो G20 के बारे में हम सारा बैकग्राउंड भी डिस्कस कर लेंगे जो भी इसका न्यूज़ है, कि ताकि आपका रिविजन भी हो जाए, which helps you in ALET and CLAT to be held in next month. Okay, so let's start with the news. So the first is that PM with Xi Biden in Bali talks with 8 leaders today. So we already know that Putin has decided not to go to वहाँ के जो foreign minister है Sergei Lavrov, he is visiting G20. He is there, and Xi Jinping, who has been elected as the president of China for the third time, and then Joseph Biden, they all are in Bali for the G20 summit. जैसा कि हम जानते हैं जो ये G20 समिट है, इट इज 17th G20 समिट एंड इट्स थीम इज रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर. हमने पहले भी ये किया हुआ है. जो थीम ऑफ 2022 इज रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर. इसका जो वेन्यू है वो है नूसा दुआ बाली. नूसा दुआ बाली में ये होने वाला है या हो रहा है. उसके बाद जैसा मैंने पहले ही बताया था आपको G20 के बारे में, जो शेरपा है इंडिया के वो है अमिताभ कांत. अब हम आते हैं ग्रुप ऑफ 20 G20 के बारे में. G20 में अगर आप देखेंगे ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है फॉर 19 कंट्रीज एंड 1 यूरोपियन यूनियन. ओके, तो इसका जो एम है फॉर टू प्रमोटिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बट अब जो है इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एजेंडा ऑफ G20. तो इसमें इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम कंसिस्टिंग ऑफ 19 कंट्रीज, ठीक है, एंड 1 इज यूरोपियन यूनियन. इसमें जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द 2 इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन. 1 इज यूरोपियन कमीशन एंड द नेक्स्ट इज यूरोपियन सेंट्रल बैंक. G20 जो है इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1999, ठीक है, बट इट गेन प्रोमिनेंस इन 2008. तो 2008 से रेगुलर समिट G20 की हो रही है, और 2009 में G20 ने डिक्लेयर किया था दैट G20 इज गोइंग टू बी द प्राइमरी वेन्यू फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन. ओके, उसके बाद G20 जो है उसके बारे में एक फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं जहां पे इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट G20 इट रिप्रेजेंट्स 80% ऑफ वर्ल्ड GDP. तो इट रिप्रेजेंट्स, अगर आप देखेंगे, 80% ऑफ वर्ल्ड GDP, पहला. Second, it represents 2/3 of the world population. Okay, 2/3 of world population. This is the second thing. Third, it represents 60% of world's land area. 60% of world's land area, and it represents 3/4 of total global carbon emission in the world. तो जैसा कि हम देख रहे हैं 80% of world GDP, 60% of land mass, 2/3 of population, 3/4 of global carbon emission. Now let's see the next news which is important, that PM Modi reiterates call to stop war in Ukraine. तो again this is for the third time. पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने SCO समिट में कहा था कि it is not an era of war. उसके बाद जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री S Jaishankar, when he was meeting Sergei Lavrov, okay, so he also said that it is not an era of war. And now again our prime minister has reiterated that there is a need to stop war in Ukraine. The next is India's export shrinks 16.7% and import rise 5.7% in October. Now see friends, ये जो paragraph है, this is very important, that October it is the 4th successive month when the gap between India's import and export is more than $25 billion. तो अगर आप देखेंगे जो इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, इसको हम विजिबल कहते हैं, it shrank 16.7% in October to $29.8 billion. This was mainly because of a slowdown in global demand. So Indian export जो है it is still suffering because of slowdown in global demand. ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे it is below $30 billion. तो इसके पहले February 2021 when it was COVID-19 year, our export was less than $30 billion. फाइन. उसके बाद जो इम्पोर्ट है इट इज ग्रोइंग बिकॉज इंडिया इज रिकवरिंग. सो इम्पोर्ट हैज ग्रो टू $56.7 billion एंड द ट्रेड डेफिसिट इज $26.9 billion. Okay, so it is more than $25 billion for the 4th consecutive term. The next is my head hangs in shame, says judge over the relief delay to kin of severe death victims. तो ये बात चल रही है चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट. उन्होंने कहा है कि my head hangs in shame.
Okay, he had condemned the Delhi Development Authority for not paying rupees 10 lakh each as compensation to the families of two persons who died after inhaling toxic gases inside a sewer in September this year. Okay, अगर आप देखेंगे कि क्या कोई ऐसा स्कीम है गवर्नमेंट का विच इज रिलेटेड टू स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है, तो वी हैव अ स्कीम, दैट स्कीम इज कॉल्ड एज नमस्ते, NAMASTE, नमस्ते। तो नमस्ते का जो फुल फॉर्म है, इट इज नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ओके, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड sanitation ecosystem, that is the full form of Namaste scheme. This is the scheme which comes under Ministry of Social Justice and it is in collaboration with Ministry of Urban Affairs. Okay, so Ministry of Social Justice के अंदर ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है and is a joint initiative of Ministry of Social Justice and Ministry of Housing and Urban Affairs. नमस्ते के अगर आप पॉइंट्स देखेंगे, मेन पॉइंट्स, तो नमस्ते के जो मेन पॉइंट्स है वो ये है, पहला जीरो फैटेलिटीज, मतलब जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं दे शुड नॉट डाई वाइल आफ्टर कमिंग इन टच और आफ्टर इनहेलिंग द हार्मफुल गैसेस वाइल क्लीनिंग द सीवर। सो द फर्स्ट इज जीरो फैटेलिटीज। सेकंड इज अल्टरनेटिव लाइवलीहुड, ओके, तो इनको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड करना। द थर्ड इज दैट दे शुड बी कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट इज द पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत। सो दिस आर थ्री मेजर हाईलाइट्स ऑफ नमस्ते स्कीम। अब जैसे कि आप स्कीम का नाम देख रहे हैं, दैट नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, तो डेफिनेटली दिस स्कीम प्रमोट्स द यूज ऑफ मशीन्स फॉर क्लीनिंग ऑफ सीवर सो दैट पर्सन दे डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द harmful gases etc. leading to death. The next is India's population growth is stabilizing. It is an indicator of effective health policy, says United Nations. So for here, one day is very important which you should remember, that is 15th November. देखिए 15th November जो है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो आपने पढ़ा होगा कल दैट ऑन दिस डे जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड। सो द सेकंड एडिशन ऑफ जनजातीय गौरव दिवस was celebrated on 15th November to commemorate the birth of Bhagwan Birsa Munda. The next is that this is the day on which the global population reached 8 billion. So 12 years before, okay, the world population was 7 billion, now it is 8 billion. So the United Nations has said that India's population growth appeared to be stabilizing. Stabilizing का मतलब जब हमारा total fertility rate 2 पे आ जाए तब हम कहते हैं कि population stabilization होना start हो गया है. So United Nations has observed that India's population growth appeared to be stabilizing, which shows that the country's national policies and health systems, which include access to family planning services, are working. For example, if you will just see over here that the total fertility rate. Now what is total fertility rate? It is more or less, it is the average number of children born per woman. Okay, अगर ये 2 है, ठीक है, फाइन, तो इसका मतलब पॉपुलेशन स्टेबलाइज होता है। अगर हमारा आप नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी देखोगे तो हमारे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, आवर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में रिलीज हुआ था, NPP। तो उसका एक, उसके 3 गोल्स हैं, एक है शॉर्ट टर्म गोल्स, फिर है मीडियम टर्म गोल, द नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या है? एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज। मीडियम टर्म गोल क्या है? दैट द टोटल फर्टिलिटी रेट शुड बी 2.1 एंड लॉन्ग टर्म गोल इज दैट पॉपुलेशन शुड स्टेबलाइज बाय 2045. So the total fertility rate है, okay, now it has declined from 2.2 to 2.8 at the national level according to the United Nations Population Fund. अगर आप देखेंगे, a total of 31 states and union territories they have achieved fertility rates below the replacement level of 2.1. To replacement level of 2.1, what is this replacement level of 2.1? It means that our population has stabilized. Replacement level का मतलब when the total fertility rate is 2.1, it means that the next generation will have as much numbers as the previous generation. इसका मतलब आपका population जो है वो stabilize हो चुका है. Okay, so that's what this report is saying. अगर आप देखेंगे the factors which have contributed to it, so it is adoption of modern family planning methods which has improved from 47.8% 5 years before to 56.5% in 2019-21. The second is there is reduction in unmet need for family planning by 4 percentage points. अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वरिंग फैक्टर ये है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 8 बिलियन है, तो पिछले 12 साल में द वर्ल्ड हैज़ एडेड 1 बिलियन पॉपुलेशन मोर। तो इसमें से 177 मिलियन पीपल हैव बीन एडेड इन इंडिया।
अगर आप चाइना से बात करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इट इज ओनली 73 मिलियन पीपल. सो चाइना हैज एडेड ओनली 73 मिलियन पीपल in this 12 years, but India has added 177 million people. अब फ्यूचर में जो होगा, चाइना का जो कंट्रीब्यूशन होगा इन द नेक्स्ट बिलियन, दैट विल बी नेगेटिव. नाउ आपको भी याद आ रहा होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, एक रिपोर्ट आया था बहुत पहले ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, दैट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022. तो ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 है, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दैट विच डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन रिलीज दिस रिपोर्ट, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ओके, यूएनएफपीए, but this is the agency which has not released world population prospect. The world population prospect report, it has been released by UN Department of Economic and Social Affairs, okay, UN DESA कहते हैं उसको. So UN DESA has released world population prospect, world population prospects 2022. इस रिपोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, वो ये बोली गई है that India is going to surpass China as the world's most populous nation by 2023. So in 2023, India will become the most populous nation of the world. The next is, हम World Population Day कब celebrate करते हैं? So we celebrate World Population Day on 11th July. Okay. Now let's discuss inflation. Stay watchful. तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्टे वॉचफुल, तो यहाँ पे अक्टूबर का इन्फ्लेशन डेटा है विच इज 6.7%, 6.77%, ठीक है ना, अक्टूबर का. सितंबर में द इन्फ्लेशन वाज 7.41%, एंड दिस रिडक्शन इन इन्फ्लेशन इज मेनली बिकॉज ऑफ कूलिंग ऑफ फूड प्राइस इन्फ्लेशन. तो अगर आप देखेंगे जो कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन, इट हैज ऑलमोस्ट डिक्रीज बाय 160 बेसिस पॉइंट इन अक्टूबर टू 7.01%. अगर आप लास्ट मंथ में देखेंगे देन इट वाज 8.60%. द मेजर फैक्टर विच हैज कंट्रीब्यूटेड टू रिडक्शन इन कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स इज डिक्लाइन इन प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, ऑयल्स एंड फैट्स. उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द वेटेज ऑफ फूड एंड बेवरेजेस इंडेक्स इन सीपीआई, सो इट इज 46%. उसके बाद इफ यू विल देखेगी दैट इफ यू विल सी दैट द स्लो डाउन इन फूड प्राइस गेन्स अंडरस्टैंडेबली स्टेयर्ड ओवरऑल इन्फ्लेशन लोअर, even as price gains in three essential categories, namely clothing and footwear, housing and health, remained little change from September or quickened. मतलब ये कह रहा है कि हाउसिंग में, क्लोथिंग में, हेल्थ में, फुटवेयर में प्राइसेस कहीं ना कहीं सेम रहे हैं या थोड़े से ऊपर गए हैं, बट देन ऑल्सो द इन्फ्लेशन हैज डिक्लाइंड मेनली बिकॉज ऑफ decline in food price inflation. So some of the other factors are favorable base effect, okay, then cooling in international prices of commodities which includes crude and steel, okay, and gathering uncertainty in advanced economies was largely instrumental in tempering wholesale price gains. The next is COP26, a call to action to avoid climate catastrophe. तो अगर आप इसमें देखेंगे that we are discussing about COP, तो यहाँ पे है कि दैट सिंस COP26 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट इन ग्लासगो, कंट्रीज हैव ओनली प्रॉमिस्ड टू डू 1/50th ऑफ व्हाट इज नीडेड टू स्टे ऑन ट्रैक टू कीप टेम्परेचर्स विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. तो अगर आप पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का गोल देखेंगे, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट COP21, तो इसका गोल है टू लिमिट द rise in global temperature at 2 degree Celsius and ideally at 1.5 degree Celsius. अब इसको अचीव करने के लिए COP26 which was held in Glasgow, यहाँ पे कंट्रीज ने कुछ कमिटमेंट दिया. अब ये रिपोर्ट्स आ रही है कि जो कमिटमेंट है इट इज़ 1/50th ऑफ व्हाट इज नीडेड. Okay, we need to do more because already world is seeing floods in Pakistan, heat waves in Europe, forest fires in Australia, hurricanes in United States, and there are various reports which is suggesting that already the world temperature has risen to 1.1 to 1.2 degrees Celsius from pre-industrial level. So 1.5 degrees Celsius is our goal. So we are just 0.3 degrees Celsius away from it. Now this situation has been exacerbated or has been made more difficult by the Russia-Ukraine crisis. जैसे कि अगर आप देखेंगे रशिया यूक्रेन क्राइसिस के वजह से क्रूड ऑयल सप्लाई, गैस सप्लाई में हिट हुआ है. देयर इज एनर्जी क्राइसिस गोइंग ऑन. सो मैनी कंट्रीज, मैनी कंपनीज, दे हैव अनाउंस्ड investment in fossil fuel projects which are going to increase the carbon emission and we may not be able to achieve the Paris climate action goals.
The next is that rich countries account for just 1 in 8 people in the world today, but they are responsible for half of greenhouse gases. So definitely they have moral responsibility to help developing countries, especially in the term of finance. So rich nations, they should deliver on the promise of previously committed funds such as $100 billion a year from 2020. Okay. उसके बाद article is suggesting there should be a windfall tax on the combined profits of largest oil and gas companies, which is estimated at almost $100 billion in the first 3 months of the year. This needs to be enacted. So now there is an urgency from the developed countries to work on this. We can see that during COP27, the climate finance, this became the formal agenda in the climate action talks, and now there is a pressure on the developed countries to mobilize $100 billion fund every year for adaptation and mitigation. Out of that, if you will see, around $83 billion has been already mobilized. Okay, but availability for adaptation and mitigation is very much less than that. Now there is a report, is climate change affecting global health? तो यहाँ पे Lancet का एक report आया है, that is the 2022 Lancet countdown on health and climate change, health at the mercy of fossil fuels. Now this report points out that increasing world reliance on fossil fuel, it increases the risk of disease, food insecurity and other illness related to health. जैसे कि अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, so it says that climate change, it affects the social and environmental determinants of health such as clean air, safe drinking water, sufficient food and secure shelter. ये सारे कुछ climate change के वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं. उसके बाद climate change, it leads to heat wave which mostly affects vulnerable populations such as adults or old people and younger children. Then there is also rise in infectious disease. For example, if you will see, that vibrio pathogens, they are going to increase in coastal areas. Then there can be increased likelihood of malaria transmission in Americas and Africa. Then climate change can cause 250,000 additional deaths per year from malnutrition, disease and heat stress. Then climate change से क्या होता है, देखिए, higher temperatures, they threaten the crop yields directly with the growth season shortening for many cereal crops. उसके साथ साथ it impacts supply chain, undermining food availability, access, stability and utilization, which can lead to food insecurity. Then if we can see, which we have already discussed, that the war has led many countries to search for alternative fuels to Russian oil and gas. Okay, and some of them are still turning back to traditional thermal energy, that is coal based thermal power plant, which can increase the emission. Report कहता है कि there should be health centered response to climate change. Okay, for example, there should be improved energy security, okay, creating an opportunity for economic recovery. Then improvements in air quality, it will help prevent deaths resulting from exposure to fossil fuel derived ambient PM2.5. Then stress on low carbon travel, increase in urban spaces, it will promote physical activity. Then balanced and more plant based diets, these are also necessary. Then the report indicates that the sort of health focus shift would reduce the burden of communicable and non-communicable disease and reducing the strain on healthcare providers and leading to more robust health systems. The next is troops in Eastern Ladakh get 3D printed habitats and defenses. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे that the corps of engineers, they have used 3D printing to construct 22,000 temperature controlled relocatable habitat in the high altitude areas. Okay, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे that there is a talk of building alternate transport routes. We already have Atal Tunnel which provides access to Lahore and Spiti Valley, and we require 3 more tunnels that is to be constructed, that is Baralacha La, Lachung La and Tanglang La tunnels. Then this road, okay, there is a need of road which will provide alternative connectivity to Western Ladakh and Jaskar Valley directly from the Manali. Then there is a 298 km national high double lane specification road and 65% of this road has been completed. Then this road also includes 4.1 km twin tube Shinkun La tunnel for providing all weather connectivity. Now coming to Atal Tunnel, so it was inaugurated in October 2020 and was designed for 3,000 passenger cars per day, but almost 7,500 vehicles are crossing it every day. Then there is the construction of Darbuk Shiok Daulat Beg Oldie DBO road. Okay, so it is a 255 km road
Okay, and once it is completed, then moving heavy tanks to the frontier areas will be quite easy. Then Army Corps of Engineers in consultation with IIT Gandhinagar, they are coming up with 3D printed permanent defenses for forward areas also. So these 3D printed defenses, they can take direct hit from T-90 tank from 100 meters away, and they can be constructed in a very less time. The next is third edition of No Money for Terror Forum to discuss crowdfunding of terrorism. So India is hosting No Money for Terror conference. Okay, so it will be held in New Delhi from November 18th and 19th. Okay, and we'll see the representatives from nearly 75 countries participating in it. इसके चार मेन टॉपिक्स हैं डिस्कशन के. दोज आर डिस्कसिंग ग्लोबल ट्रेंड्स इन टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग, use of formal and informal channels for terrorism, emerging technologies and terrorist financing, then international cooperation to address challenges in combating terrorist financing. इसमें से जो फोकस है अगर आप देखेंगे, that is the use of crowdfunding platforms to finance terror activities, and the next is weak control mechanisms of social media platform. This is one of the topics which is going to be discussed. अब देखिए क्राउड फंडिंग होता कैसे है. क्राउड फंडिंग डार्क वेब के थ्रू होता है, विच ब्रिंग्स टुगेदर प्रोफेशनल हैकर्स एंड टेररिस्ट हु आर सीकिंग द ट्रांसफर ऑफ क्राउड सोर्स फंड्स. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस दे आर एनोनिमस, डिसेंट्रलाइज्ड एंड ऑफन अनट्रेसेबल. So we need a collective approach, a global approach to stop this miracle. Apart from that, an effective legislative framework can help that internet service providers and social media platforms they work towards effective, proportionate and dissuasive self-regulation, so that terrorist groups they do not take the advantage of social media platforms. The next is National Commission for Women. Okay, so it has launched the fourth version of Digital Shakti program, which was dedicated to teach women to be safe online. Okay, so the fourth edition has been launched, which expand the ambit of its cyber security program to enable women on using the digital space. Now, this fourth edition of Digital Shakti, it has come up with the collaboration of Cyber Peace Foundation, which is partnering with NCW and Meta to implement this program. The next, एक नाम बस आप याद रख लीजिए. Okay, one Al Jazeera journalist who was shot dead in May. Her name is Shirin Abu Akleh. Okay, so US probe into journalist death, an important step according to Abu Akleh family. तो ये जो अबू आलेख हैं, okay, she was Al Jazeera journalist and she was covering the incidents, okay, and she was likely killed by an Israeli soldier. Now, one important appointment, former Chinese envoy to India appointed vice foreign minister. So here the news is that जो पहले चाइना के envoy थे, ठीक है, हमने बहुत बार इनका नाम भी पढ़ा है न्यूज में, सन वेडोंग. ओके, now who has spent a little over 3 years in India as a Chinese ambassador. Now he has been appointed as vice foreign minister. The next is 9 Russian banks open Vostro accounts. So the Vostro accounts, so Russian banks they have been permitted to open Vostro accounts in India. It will enable an importer to remit rupee funds into it. The रशिया का जो गैसप्रोम बैंक है, it has opened an account with UCO Bank. Now what is this Vostro and Nostro account? ये मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ आपको. नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो, ठीक है ना, इसको आप ऐसे याद रखो. नॉस्ट्रो का मतलब मी, वॉस्ट्रो का मतलब यू. पहले आप ऐसे याद रखिए. अब समझ लीजिए कि एक बैंक है ए इन इंडिया, वन बैंक इज देयर बी इन रशिया. अब बी ने क्या किया, ए में अपना एक अकाउंट खुलवाया, ठीक है ना. बी का अकाउंट ए के पास है, बी का अकाउंट ए के पास है, ठीक है, फाइन. तो बी के लिए, बी ने अपना अकाउंट खुलवाया है ए में, तो बी के लिए ये अकाउंट हो जाएगा नॉस्ट्रो, दैट माई अकाउंट. ओके, दैट माई अकाउंट इज विद यू. और ए के लिए यही सेम अकाउंट क्या हो जाएगा, वॉस्ट्रो, दैट योर अकाउंट इज विद मी. मतलब बी इज सेइंग टू ए दैट माई मनी इज विद यू, एंड ए इज सेइंग टू बी दैट your money is with me. So for B the same account is Nostro, okay, and for A it is the Vostro account of Russian bank. So for B it is Nostro accounts in Indian banks, and for A it is the Vostro accounts of Russian banks. That is the meaning of Nostro accounts. Okay, so friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.